Now today, let's start with chapter number 6, the Great Uprising. In this chapter, we will study about revolt of 1857. हम revolt देखेंगे. By the middle of 19th century, the British was established themselves as the main political power. A large part of country, including even area ruled by Indian princes, was directly or indirectly under the country. King, queens, peasant, landlords, tribal soldiers were affected in different ways. इसमें बहुत सारे किंग्स, क्वींस, लैंडलॉर्ड्स थे, पीजेंट्स थे, ट्राइबल्स थे, सोल्जर्स थे, सब बहुत इफेक्ट हुए. ठीक है. मुगल एम्पायर एंड नवाब्स लॉस्ट देयर पावर. यहाँ पे क्या हुआ, जो मुगल एम्पायर है इसने पावर अपनी लॉस्ट कर. The Mughal Empire and Nawabs lost their power. They existed only for the name's sake. They had neither territory nor power. Residents had been stationed in many ports. Their revenues and territories has taken away stables. Many ruling families tried to negotiate with company to protect their interest, but company, confident of his superiority and military power, turned down this place. ठीक है, जो कॉन्फिडेंट था और सुपैरिटी थी मिलिट्री टाउन की, वो क्या हो गई. Awadh was one of the last territory to be annexed. Now the company even began to plan how to bring Mughal dynasty to an end. फिर अवध जो थी वो लास्ट टेरिटरी थी जो एनेक्स करनी थी, और मुगल ने फिर अब कंपनी ने क्या शुरू करा, दे स्टार्टेड हाउ टू डिक्लाइन एंड हाउ टू गेट एंड ऑफ मुगल डायनेस्टी. द नेम ऑफ मुगल किंग वॉज रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी. ठीक है, कंपनी ने क्या करा, जो कॉइन्स मिंट करे जाते थे वहाँ से मुगल का जो था वो नेम हटा दिया गया. In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized. ठीक है. फिर क्या हुआ, जो कैनिंग थे गवर्नर जनरल, उन्होंने ये डिसाइड करा कि बहादुर शाह जो होंगे, बहादुर शाह जफर जो होंगे, वो लास्ट किंग होंगे, उनके बाद कोई भी डिसेंडेंट इनका नहीं आएगा. द पीजेंट्स, जमींदार एंड सिपाहीज वर वरीड. इस बात से सारे पीजेंट्स जो थे, जमींदार थे और जो सिपाहीज थे वो बहुत ज़्यादा वरी हो गए. इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार रेसेंटेड हाई टैक्सेस and rigid method of revenue collection. The loss of zamindars caused noblemen angry. The Indian sepoys in employ of company also had reason for discontent. because जो इंडियन sepoys थे, क्योंकि कंपनी का एम्प्लॉय हो रहा था, जिससे उनके बीच में क्या था, डिसकंटेंट था. They were unhappy about their pay allowances and condition of service. Some of new rules, moreover, violated their religious sensibility. All section of Indian society were unhappy under the ब्रिटिश. जो सारे सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी थे वो बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी थे किसके अंदर, ब्रिटिश रूल के. एज अ प्रोटेस्ट टू ऑल दिस इनजस्टिस, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटेस्ट एंड रिवोल्ट्स ब्रोक आउट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री बिटवीन 1763. बट दीज रिवोल्ट्स वर लार्जली sporadic, unorganized and localized. So the British had difficulty in suppressing them without much effort. इसलिए ब्रिटिश जो थे उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी इन सरप्रासिंग दैन विदाउट एनी एफर्ट. फिर हम बात करेंगे रिवोल्ट. वो एक बिगेस्ट चैलेंज था ब्रिटिश अथॉरिटी के लिए. डिटेल्स ऑफ द रिवोल्ट फाउंड इन द राइटिंग्स ऑफ कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन. Civil servants like Richard Henry Chiflot in the books written by British army officers and newspaper published and circulated during this period. अब जब रिवोल्ट हुआ 1857 का, तो जब रिवोल्ट हो रहा है तो उसका कोई ना कोई कॉजेज होंगे. तो हम इसमें कॉजेज पढ़ेंगे, कुछ हम इकोनॉमिक कॉजेज पढ़ेंगे, पॉलिटिकल कॉजेज पढ़ेंगे, सोशल कॉजेज देखेंगे और मिलिट्री कॉजेज भी देखेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज. जो इफेक्ट था ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे, वो इकोनॉमिक कॉजेज क्या. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द रिवोल्ट वॉज ब्रिटिश एटीट्यूड ऑफ इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया. जो ब्रिटिश का जो एटीट्यूड था, जो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहा था लोगों को, इंडियन पीपल में. द पीजेंट सफर ड्यू टू हाई रेवेन्यू डिमांड्स एंड स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ इट्स कलेक्शन. इवन व्हेन क्रॉप्स फेल्ड ही वाज फोर्स्ड टू पे लैंड रेवेन्यू. जब क्रॉप्स फेल्ड में जाते थे तब भी उनको फोर्स करा जाता था कि आपको क्या पे करना है, लैंड रेवेन्यू पे को. ठीक है. आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट्समैन वर रूल्ड बाय अनफेयर कॉम्पिटिशन.
The machine-made goods from Britain were imported into India without any duty being levied on them. So they were cheap. People preferred to buy these goods as they were much cheaper than man-made goods. लोगों ने क्या करा, goods buy करने शुरू करे क्योंकि ये क्या थे, वो सस्ते थे और ये man-made goods थे. So the traditional handicraft industry of India was, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी हमारे इंडिया की वो ruined हो. During the rule of English, people who earned living by following religions, culture, profession like priest, poet and musician lost their source of life. The princes थे, priest थे, musician थे, इन्होंने अपना source of livelihood को क्या करा, lost कर दिया. Now we will talk about political causes. The British policy like annexation of territories of India rule, doctrine of lapse made the ruling section of society end. रीडर्स जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहिब बिकम एनिमीज ऑफ द ब्रिटिश. जो आपके रानी लक्ष्मीबाई थे और नाना साहिब थे दोनों क्या बन गए, एनिमीज बन गए ब्रिटिश के. एंड द एनेक्सेशन ऑफ अवध ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नमेंट ऑल्सो हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ सिक्वाइज ऑफ कम बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द सिक्वाइज केम फ्रॉम द स्टेट. The condition of the people of the state worsened after annexation as additional taxes were imposed on them and farmers were made to pay higher revenue. At same time, no arrangement was made to provide alternate employment to the people who lost their job. जिनकी जॉब वगैरह भी लॉस हो गई तो alternate employment नहीं दिया. ये क्या थे कुछ political causes से. Now we will see some social causes. देखो जो conservative India society है वो वो कोई भी social reformers introduce like नहीं कर रही थी. जो किसने introduce करे थे, ब्रिटिश ने. Reformers like abolition of sati, legalization of widow remarriage and annexation of Western education to women were looked upon by the Orthodox India as interference in the social custom of India. वो कहते हैं abolition of sati, legalization of widow remarriage और extension of Western education. ठीक है. The various social discrimination faced by Indians like denial of promotion, opportunities for appointment turned the educated Indians against British rule. इन्होंने क्या करा, एजुकेटेड इंडियंस को किसके अंडर या किसके अगेंस्ट कर दिया, ब्रिटिश रूल के अंदर अगेंस्ट. नाउ रिलीजियस कॉज. देखो हमने इकोनॉमिक कॉजेज देखे, पॉलिटिकल कॉजेज देखे, सोशल कॉजेज. कुछ रिलीजियस कॉजेज भी थे. वो क्या थे, पीपल हाईली रिजेंटेड द इंक्रीजिंग एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज इन द कंट्री. ठीक है, एक्टिविटीज जो थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी किसके, क्रिश्चियन मिशनरीज से. They feared that the British government was determined to destroy their religion and convert all the people to Christianity. The actual conversions made by the missionaries in some areas added to fear. The British government also imposed taxes on lands belonging to temples and mosques. It was also a cause of public concern. ये cause था the public concern. Military causes. ये बहुत ज़्यादा popular हुए at the time of rebellion. A major part of British troops were Indians. The various economic, social and religious differences had direct impact. Moreover, they were looked upon inferior beings and treated badly by their British superiors. They were put much less than their British confederates and sepoys promotion were also limited. जो promotion था sepoys का वो भी क्या था, बहुत ज़्यादा limited था. The Indian sepoys were not allowed to wear marks showing their caste and sex. They were not allowed to wear masks. आप मास्क वगैरह नहीं पहन सकते. Hurt their sentiment. The Act of 1816, under which new recruits were required to travel if needed, also caused many annoyance. Hindu believed traveling overseas led to loss of caste. They were also annoyed for the continuance of the foreign alliance Bhatta, which was used and get earlier for fighting outside the country. Then after that we will start with greased cartilage incident. पता है greased cartilage incident क्या था? वो मीट से बनता था और जो मिलिट्री मैन होते थे उसको क्या करता, कार्टूस को मुंह से छीलना होता. ठीक है, और वो हमारे हिंदू रिलीजन के खिलाफ था. इस इंसिडेंट को मैं आपको बताती हूँ. The discontent and angry against British rule had been growing among the Indians for a long time, and only a spark was needed to start a war. खाली एक स्पार्क चाहिए होता और वो स्पार्क क्या था, वो आपका ग्रीस कार्टिलेज इंसिडेंट. At this time, new type of rifle known as inflated rifle was introduced.
The cartridge of this rifle are covered with waste paper, which has to be bitten off before using cartridge. उसको आपको cartridge को पहले bite off करना, ठीक है. And rumors spread that waste used in paper was made of cow and pig fat. और एक rumor फैल गई कि वो जो grease बनी है वो किसकी बनी है, cow की और pig के fat की. Since cow is sacred for Hindus and Muslims do not eat pork, they thought it to be a direct attack on their religion. वो क्या कह रहे थे, इसका यूज करके ये क्या है, हमारे रिलीजन पे एक तरीके का डायरेक्ट अटैक. Both the communities refused to use the cartilage and it became the immediate cause of the revolt. और ये जो cartilage का ये क्या था, एक तरीके का immediate cause था. इसकी वजह से ही रिस्पार्क था आपका ग्रेस cartilage का. इससे क्या हुआ, आपका रिवोल्ट स्टार्ट हुआ. बिगनिंग ऑफ रिपोर्ट. The first protests came from Mangal Pandey, a soldier belonging to 34th Infantry Station at Barakpur. He refused to use cartridge and he made the British hang. He was arrested. भाई इसने मंगल पांडे ने इस चीज़ को करने से रिफ्यूज़ कर दिया था. ब्रिटिश बहुत गुस्सा हुआ, उसको अरेस्ट कर लिया और हैंग कर दिया फॉर हिज disobedience. Again on 24th April 1850, some soldiers stationed at Meerut also refused to use the cartridge. They too were arrested and punished severely on 9th May. On 10th May 1850, the angry soldiers in Meerut revolted. They attacked and killed the British officers and released their imprisoned commandants and raised the flag of Great League. फिर 10 मई को क्या हुआ, इसकी वजह से जो जब मेरठ के जो सोल्जर्स थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, तो 10 मई को क्या करा, सोल्जर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया और अपने जो सोल्जर्स थे जो उन्होंने रेस करे हुए थे उनको निकाल दिया और उन्होंने फ्लैग दिखा दिया किसका, ग्रेट रिवोल्ट. 11 May 1857, the soldiers reached Delhi and they were joined by the local infantry. The rebels captured Delhi and declared Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar as the Emperor of India. और उन्होंने बहादुर शाह जफर को क्या बना दिया, Emperor of India. स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट. ऐसा नहीं है कि रिवोल्ट एक ही जगह हो रहा था, बहुत जगह दिल्ली, लखनऊ, अजमेर, बहुत जगह फैल गया था, ठीक है. Soon the revolt spread among the soldiers in various parts of central and northern India. मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी become the main site. आपका दिल्ली हो गया, मेरठ हो गया, लखनऊ हो गया, झांसी हो गया, कन्नौज हो गया, ये तो बरेली हो गया, ये क्या थे आपके मेन सेंटर्स थे रिवोल्ट. Some uprising were also occurred in parts of Bengal, Assam, Odisha, Madhya Pradesh, Bihar, Rajasthan and Mazhar. इन जगह पे भी फैला. लेकिन लखनऊ की बात करें, अगर लखनऊ में जो रिवोल्ट है वो किसमें लड़ रहा था, हजरत महल. ये बेगम थी किसकी, अवध, ठीक है. Who was acting as a regent of her son, held by sepoy of Lucknow, जमींदार and peasants of Awadh. इसने क्या करा, compelled to give up the city, they entrenched themselves in the resident building. In the end, siege of residency failed as a small British garrison fought back with exemplary fortified valor. जो लीडर्स थे वो कौन कौन थे, दिल्ली में बख्त खान थे, कानपुर पे नाना साहेब थे, ठीक है, जो अपने वो पेशवा वो कहते थे, तांत्या तोपे थे और अज़ीमुल्लाह थे. लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, उनको मौलाना अहमदुल्ला सेठ ने वो करा था. झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बरेली से खान बहादुर खान, आरा और वहाँ से कौन थे, कुंवर्स. ये कुछ लोग थे जिन्होंने, कुछ लीडर्स थे जिन्होंने रिवोल्ट्स में पार्ट पाए, ठीक है. नाउ इंसिडेंट एट अवध. द रिवोल्ट वाज एट पीक इन अवध. लखनऊ वाज द कैपिटल ऑफ अवध एंड नवाब वाजिद अली शाह वाज द, अवध तो कैपिटल थी और आपके नवाब वाजिद अली खां क्या थे, लीडर. Then after the revolt broke out, the people went to rampage and complete massacre of the British. एक complete massacre, बहुत ही तगड़ा massacre था जो हुआ. Sir Henry Lawrence, chief command commissioner, along with 100 Englishmen and 700 Indian soldiers, fought refuge inside the residence. The rebels attacked the residency and killed most of the English, including Sir Henry Lawrence, और जो उनके इंग्लिश जनरल थे और मीर, वो भी मार दिया गया था. The Begum Hazrat Mahal, leader of rebels, proclaimed her young son, British father, as a Nawab of Awadh. At last, General Colin Campbell, the commander-in-chief थे British forces in India के, along with his troop, English and Gorkha soldiers, besieged Lucknow and recaptured it as a fierce battle in March 1858.
Suppression of the revolt accompanied flights back. In spite of participation of all classes in the revolt, it took the British Army little less than 1 year to put down the revolt. The British Army, led by Colin Campbell, Sir Henry Havelock, recaptured the lost territory. जो आपके हेनरी कैम्पबेल, हेनरी थे और कॉलिन कैम्पबेल थे, उन्होंने अपनी टेरिटरीज को रीसीज कर दिया. In 1857, Delhi was recaptured by the British forces and Bahadur Shah Zafar, the last Mughal emperor, was taken prisoner and exiled to Rangoon in Burma, thus ending the Mughal dynasty. Bakht Khan, Rani Lakshmi Bai, Khan Bahadur Khan died in fighting. Nana Sahib, Begum Hazrat Mahal fled to Nepal, while Tantia Tope was captured and hanged. Tantia Tope को captured कर दिया, उसको hang कर दिया गया. ठीक है? Causes of the failure of revolt. अब भाई revolt का failure हुआ था, उसके क्या causes थे? Although it was an all-out revolt against the British rule in India, it could not last an organized and powerful enemy. It took British Army less than 1 year to suppress the revolt. अब कुछ various reasons थे जो responsible थे उसके failure के. The revolt did not spread throughout the length and breadth of country. Southern and western part of India remained largely unaffected. ठीक है, और जो southern और western part थे वो बहुत ज़्यादा unaffected थे. Many of the Indian rulers refused to help the revolt, and some of them eventually openly supported the British in suppressing. The rebel could not enjoy the support of middle and upper classes and modern educated Indians as well. जो modern Indian और upper classes थे उन्होंने support नहीं किया. The revolt was unorganized. The rebels had no ideology or program to be implemented. They had no idea of what to do after the capture of India. उनके पास कोई idea नहीं था कि उन्हें क्या करना. The overall leadership of the movement was weak. Instead of the interest of whole country, most of the leaders had the self-interested mind. Most of the leaders जो थे उनको क्या था? Self-interest था. They fought with the sole intention of making their own territories free. There were no national leader to coordinate the movement and give it the purpose and direction. उसको क्या दिया? एक purpose दिया और direction दिया. In comparison to the organized and powerful British Army equipped with modern firearms, the rebels lacked funds and weapons. भाई देखो, एक तो funds भी कम था और weapons भी नहीं थे. उसके वजह से भी क्या हुआ? हमारा failure. The revolt of 1857 paved the way for the national struggle for freedom. It was the first indication that Indians wanted to get rid of foreign rule and was ready to stand united for this cause. It failed to achieve its main objective, sowed the seeds of nationalism in the heart of India. उसने seeds दिखाई किसकी? Nationalism की in the hearts of India. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.